Hello and welcome to another episode in the Rex Room. I'm your host Supriti Batra, and today I have been joined by Angad Suroya, a visionary into a very unique experiential desert trail safari at Khur. Desert Trail is celebrating the Rajasthani heritage and is redefining what rustic luxury looks and feels like. Thank you, Angad, for coming all the way and being on our show. Thank you So so much. let's just get started. Sure, Yeah? ma'am. Sure, Okay. ma'am. What inspired you to, build this sustainable property in the desert trail in Khuri? And was it like the location, or was it the lifestyle that you saw there, or was it something like a deep inner calling? So, Jaisalmer, ma'am, is a very fascinating place. So, when I went there for the first time as a tourist, I interacted a lot with the locals. I just wanted to understand their stories, how they live, what is the culture. And it was very, very warm. The way people were reciprocating me. और आप मान लीजिए कि मैं उन 7 दिनों के लिए दूल्हा था. Wow. The way they were welcoming me, the way they were taking care of me, and the way they were reciprocating to every question which I was asking. Okay. कि लोग क्या काम करते हैं, पहले कैसे होता था, ठीक है. जब 1965 का टाइम था, बिकॉज खूडी इज वेरी क्लोज टू द इंडो पाक बॉर्डर. Right. तब कैसा था, हाँ. यू नो, तब क्या माहौल होता था, तब बिजली नहीं थी, लोग कैसे ट्रैवल करते थे. तो दे वुड टेल मी फैसिनेटिंग स्टोरीज कि हम कैमल से ट्रैवल करते थे. दे वुड वॉक 50 kilometers every day My God. to reach to Jaisalmer, because Khudi is, ma'am, 50 kilometers away from Jaisalmer city. South of Jaisalmer. Yeah, it is at the south part of it. So I was very, very fascinated. People were so giving. The food is amazing. Right. And so, then I decided that, this story, this experience which I have just witnessed, I think people in the country and eventually people in the world should also witness it. Right. Because it was a very out of body experience for me. I'm a Bombay boy. Bombay boy. So people in the vibe of this city, Bombay, is very different. Correct. People in Jaisalmer, उनको जब लगता है कि हमारे पास कोई आया है, उनका तो मोटो ही ये है कि पधारो मारे देश, right. मारो मेहमान आयो, मारो मेहमान आयो. It's like God for them. Yeah. Yes. So it's like, वो तो मतलब आपके लिए, मतलब आप कुछ भी बोल दो उनको. Correct. कि मुझे ये चाहिए, और वो ले आते हैं आपके लिए. They make you so special. So it's the connect something to do with the location and the feel that you got, which kind of... just the culture, men smiling, they want to be part of you. Yeah. They want to, make you see what they are. उनकी stories क्या है. It is very, very fascinating. And Jaisalmer is one of the oldest towns, so they have multiple stories. मतलब जैसलमेर में लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं. I mean, dinosaur के fossils भी find हुए, which a lot of people would know. Wouldn't know. Yeah, medieval history में जाओ तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक भी किया है. वहाँ पे 2.5 साके हुए हैं. साका means जौहर. So 2.5 times this has happened. Wars have been fought over there. Right. अगर आप कंटेम्प्रेरी मॉडर्न हिस्ट्री में देखने जाओगे तो इंडिया पाकिस्तान के दो लड़ाइयाँ हो चुकी, 65 and 71. Right. और अभी भी 2025 में skirmishes हुई थी. Yes. जैसलमेर में एक लव Were स्टोरी. you there? Yeah, I was there. Yeah. Did you witness anything? I witnessed, it was one of the most troubled this thing, because more than 70 drone attacks happened. They actually fell there? No. So I think the Indian forces were very competent that ऊपर ही destroy किया था. Correct. But the aftermath had fallen. Yeah, I mean, people panicked, but Jaisalmer as a city has witnessed all these things. A lot of war, a lot of war. So, me as an outsider, it felt like an out of body experience, because हर वक्त तो नहीं होता कि मतलब ड्रोन्स और ये सब आ रहे हैं. बट पीपल इन जैसलमेर, बिकॉज उनकी जीन्स में है, They're the warrior race. Yeah. And Jaisalmer city is a gateway to Western and Central Asia also. Yes. You Correct. know?
तो जो भाटी राजपूत होते थे, इनका काम ही ये था टू डिफेंड फ्रॉम प्लंडर्स एंड एवरीथिंग, सो दे यूज्ड टू ऑल दीज थिंग्स. So, but it was an out of body experience for me. I was sure. absolutely there in flesh and bone, and I saw the flares That- and everything. So, coming back to the people and what you were saying, because people are so giving, उनकी stories इतनी है. I mean, I heard a tragic love story also, which मतलब जैसे लैला मजनू और आपने ये सब सुना होगा. जैसलमेर की भी एक बहुत फेमस कहानी है, महेंद्र और मूमल की. Oh. हाँ. सो ट्रैजिक लव स्टोरीज है, अबैंडन्ड सिटीज है, यू नो वॉर्स है, Lot of डायनासोर भी history, है, culture and everything. या is there. आर्किटेक्चर है. पीपल फ्रॉम जापान दे कम टू जैसलमेर एंड दे सी कि क्या Study the आर्किटेक्चर है, बिकॉज you know it's Jaisalmer has the only living fort in Asia, and there are only 2 or 3 living forts in the world, Yeah. and Jaisalmer is the largest of it. जैसलमेर का किले में 5000 लोग रहते हैं, और कोई फोर्ट में नहीं है. जैसलमेर हैज द यंगेस्ट फोर्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो, विच इज मोहनगढ़. तो जब इतनी सारी कहानियां हैं और लोगों को नहीं पता है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट I इट. can see that. So then I was like, you know, people in our country especially, people should know this. Know all of this. You know? Correct. थार डेजर्ट से लेके हिस्ट्री, कल्चर एंड इंडियन फूड. आई मीन फूड इज अमेजिंग. लाल मास, you know. So tell me, Dal Khor bati. is of course not one of the most obvious locations for a tourism pod, like Correct. for to say. So how did you discover its potential? Again, I mean, you know, when I went there, just the landscape of it, you know, there were less people over there. I saw lots and lots of deers and wild boars and desert fox, desert cat, eagles, vultures. You know, that the entire ecosystem, and they were, you know, this is our world. Yeah, that's their And I was life. being- That's natural to them. इट्स लाइक मैं उनके घर पे जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ डेजर्ट में हो रहा है. आई हैव सीन जंगल्स देयर, और उनके रॉ नेचुरल फॉर्म में देखा मैंने उन्हें. दैट रियली रियली एक्साइटेड मी. देयर वाज नो मोबाइल नेटवर्क देयर. रोड्स ऑल्सो वर वेरी वेरी लिमिटेड, कच्चा पक्का है ना. तो ये प्रॉपर जंगल था. आई सॉ देम इन देयर नेचुरल फॉर्म ओवर देयर. या and I was a guest at their house, you know, of these animals, and you know, wonderful, and you know, it felt like, you know, it amazes you. Yeah. You know, when you see a mother deer and a baby deer having food together, and you as a guest are just looking at them, you know, silently, not disturbing Not them. disturbing. It feels And amazing. they are unhindered about it also. Yeah, they don't care. You have arrived in their territory. Yeah. You know. Right. So when I went there, plus the kind of stories I heard, I mean, it felt magical. बातें करते करते रात हो गई. रात होने के बाद उन्होंने बताया कि आओ आपको ड्राइव पे लेके चलते हैं. सो वी वेंट टू द डेजर्ट. लाइट्स बंद की. देयर वाज नो लाइट पोल्यूशन देयर. सो आई सॉ मिल्की वे गैलेक्सी. 270 डिग्री व्यू मिल रहा था. Wow. यू नो, एयर पोल्यूशन है नहीं वहाँ पे, कोई इंडस्ट्री नहीं है, लोग कम है तो गाड़ियाँ कम है, एंड बिकॉज लोग कम है तो लाइट पोल्यूशन भी नहीं है. And I just looked at the stars. So it was like, you know, a cosmic dance happening there. So I was overawed. So I never saw, being a mesmerizing, Bombay boy. yes. Yeah, you never see You don't stars. see something like that in the city. You see Yeah. stars one day, you're like, oh my god, it's such a clear हाँ, sky मतलब today. वो दिखते हैं, हाँ, थोड़े बहुत दो चमक रहे चार, हैं. हाँ, correct. But when you see a, you know, complete umbrella of it, and you are overawed. Yeah. And when you know the context of it, that, you know, this is basically time travel. What you're seeing up there. Correct. So it, you know, I was so fascinated, I got so excited that I thought, यार ये तो यार इंडिया में इतना सब कुछ सब है कुछ देखने है, के दुनिया लिए, को यार ये तो दिखाना लोगों को चाहिए. पता चलना चाहिए. So what was your vision when you kind of started this desert trail, and how is it evolving now? So after experiencing all these things, you know, me and, you know, my friend, we decided that, you know, people should witness this. How can we protect this for the future generations also, to see this wonderful countryside which our country has? So the vision was that we promote tourism, we promote employment opportunities also over there, Right. but we protect this for the future generation also. So, you know, so tourism with sustainability. So this was the marriage which happened. That was our vision. So
people come from Bombay, people come from Japan, but at the same time we maintain the dunes also. हाँ. We don't disturb the animals at all. Yeah, that's very You know, important. that is very, very important. Yeah. No use of plastic. Use renewable sources. Like Jaisalmer in the country gets the maximum Amount of sunlight. sunlight, exactly. Jaisalmer, Bikaner and Bardmer, Yeah. that Western That- Rajasthan, yeah. Marusthal जिसे बोलते हैं. So then we decided that we should marry that. We should get solar power, installed there, so that electricity natural तरीके से हो रहा है. Rain water harvesting के programs हमने किए थे. We decided that nature में human beings भी आते हैं. So then we decided कि हम locals को hire, मतलब they will be our partners. They will be involved. Exactly. तो उन्हें how to, we trained them in hospitality because they're really, really raw. Yeah. But they're very, very giving and very, very And they're very hardworking. good at learning, I also believe. Yeah, of course. They're very enthusiastic about learning something. Because that part of the world, आप मान लीजिए कि बिजली अभी अभी आई है. It is that primitive. When you travel to that part of the country, you'll feel like you have literally time traveled. It's like, आप 100 साल पीछे चले गए हैं आप. So, how would you describe the experience that you're offering to someone who's never been to a Thar desert? Have you been to Thar desert at all? No, I haven't myself. So, what kind of a traveler are you? So I'm a very flexi traveler, if I were to say. I can do a backpacker's trip, and I can do the most luxury trip. I can Correct. go on an unplanned trip to Correct. the most detailed planned Like trip. romantic, Romantic getaways getaways also, and yeah. adventure getaways also. So I'm like Yeah. I love to travel, and so I can do any kind of travel. I'm not a fussy person that, oh my god, if I don't get my So you want to chill limo. also sometimes? Yes, I would love to lie down like on the beach, or just watch the sun. Correct. Or the stars. But you have never experienced desert. You have never experienced that. Not like that. Yeah. So very touristy experiences. Correct. So Jaisalmer, in my opinion, offers, it will satisfy every kind of a traveler. Someone who's interested into history, for example. So Jaisalmer 1156 AD में बना था. ठीक है. भाटी राजपूत अपने आप को, मतलब वो लोग कृष्ण जी के वंशज है. यदुवंशी है वो. तो कृष्ण जी के जो बेटे हैं प्रद्युमन, उनके वंशज माने जाते हैं भाटी, जिनका जैसलमेर रियासत है. 1156 में उन्होंने जैसलमेर की स्थापना की थी, जो आज से आप मान लीजिए 900 साल हो गए होंगे उस बात को. वहाँ पे हजारों साल पुराने जैन मंदिर मिले हैं. वहाँ पे गुरु नानक देव जी भी आए थे वहाँ पर, जैसलमेर पोखरण के बीच में वहाँ पे गुरुद्वारा है उनका. सो इट इज़ वेरी वेरी हिस्टोरिकली, दमदमा साहिब, या सो इट इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट इन दैट केस. एंड लॉट्स ऑफ वॉर्स हैव हैपेंड ओवर देयर. मिडिवल टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने भी प्लंडर किया है वहाँ पे. अगर आपने वो पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें पता है लास्ट जो सीन होता है जहाँ पे जौहर करता है, तो जैसलमेर में 2.5 साका हुआ है. साका मीन्स जौहर. So 2.5 times this has happened. It has wonderful architecture. People from Japan, people from Germany, I have seen, they come there. क्योंकि जैसलमेर का जो पत्थर है, it's a soft पत्थर, तो उसमें carving बहुत अच्छी होती है. So जैसलमेर has everything. So someone who is interested into history, for example, कि मुझे यार इतिहास, मतलब अलग अलग प्रकार के टूरिस्ट आते हैं. Someone who's into driving or riding a bike, जैसलमेर roads are one of the best. ट्रैफिक नहीं है. मुंबई में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे, आपको हवलदार, पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल दीज पीपल वुड बी देयर टू कंट्रोल द ट्रैफिक. जैसलमेर में डियर मिल जाएंगे, मोर मिल जाएंगे, आपको पीकॉक्स मिल जाएंगे. दे आर द ट्रैफिक कंट्रोलर्स. ऊंट मिल जाएगा तो आपको रुकना पड़ेगा. बट अदरवाइज देयर इज नो ट्रैफिक. द रोड्स आर अमेजिंग. सिंस इट्स अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, रोड्स हैव टू बी रियली रियली नाइस. क्योंकि जब आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा, भगवान ना करे किसी दिन युद्ध हो जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको रोड्स अच्छे चाहिए. करेक्ट. तो रोड्स जैसलमेर के आर सुपर्ब. सो समवन हु लव्स ड्राइविंग, जैसे बाइक राइड्स हो गई, बहुत सारे लोग जाते हैं, कार्स का हो गया. सो इट इज एन आइडियल प्लेस. क्राइम रेट इन जैसलमेर इज वेरी वेरी लेस. मतलब ना के बराबर ही है. इट्स कम्प्लीटली अ टूरिस्ट place. Someone who is interested into stargazing, उसके लिए डिलाइट है. आई थिंक जैसलमेर एंड ले, जहाँ पे भी लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम होता है, तो वहाँ से तो इट्स अ पैराडाइज.
just to chill also in the Thar desert, and you know, you enjoy the entire vibe. Jaisalmer is the ideal place. So So it also is has a lot of everything. rustic luxury. Exactly. Yeah. So how do you, kind of strike a balance at the, this desert trail? Does it have that डेजर्ट rustic ट्रेल की luxury? फिलॉसफी ऐसी है मैम कि पुराने ज़माने में लोग अगर आपने सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा, लोग कारावां बोलते Correct, हैं कारावां होता जिसे, कि था। लोग ऊंट पे जाते थे, हाँ। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करते थे, फिर रात हो गई तो ठक 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 उन्होंने अपना टेंट टेंट लगाया वेंट और लगाया, हाँ, रेस्ट किया, हाँ, और फिर ऊंट पे गए आप अगले दिन, हाँ। और आप ट्रैवल करते हो. सो Correct. द फिलोसफी ऑफ डेजर्ट ट्रेल्स इज लाइक दैट, कि आप टेंट्स पे रहते हो, टेंट्स आर रियली रियली नाइस, द बेड इज रियली नाइस, द वॉशरूम्स आर रियली नाइस. आप वहाँ आते हो रात को, आप रुकते हो, early in the morning you go and explore whatever I mentioned Right. just now. So that is the philosophy of Jaisalmer. उनको वो कारवां वाली फीलिंग देनी है उन्हें, just to understand कि पुराने ज़माने में लोग कैसे ट्रैवल करते थे, पुराने ज़माने की लाइफस्टाइल क्या थी. So it's a very a different approach in that sense. So what is luxury in this? I'll tell you, because you are some 50 kilometers away from the city. Or Jaisalmer, it's not like Bombay or Delhi. Right. Jaisalmer itself is very a very smaller primitive city. Yeah. और आप हो उससे भी 50 किलोमीटर दूर towards Indo-Pak border. Yeah, which is even more primitive. Which is even more primitive. तो वहाँ पे लग्जरी हम कैसे ऑफर करते हैं? सो जैसे फॉर एग्जांपल आप आए अपने हस्बैंड के साथ, फॉर एग्जांपल, सो वील बी अरेंजिंग अ नाइस ड्यून डिनर, कैंडल लाइट डिनर अंडर द स्टार्स एट द थार डेजर्ट. So all the food and everything. बिल्कुल आप तो पधारे. Yes, definitely. Yeah. It will be so romantic and so beautiful. सारे ही ब्रेकफास्ट करते हैं ना. ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील. सो नाउ इमेजिन आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं at the oasis, at the water body. Oh wow. Early in the morning, nice breakfast is served to you, and there are 40 to 50 peacocks just doing their own business, and you're witnessing that. Now, beautiful. I don't think any place in the country would be so. These are the kind of experiences we are doing. So Angad, you mentioned that sustainability is one of your core pillars, right, in the desert trail. Absolutely. So can you share some ways in which the desert trail actually walks the talk? Desert trails, ma'am, when you talk about sustainability, at the end of the day, we are the beings of planet Earth, right? This is our Earth. We have to take care of it. We owe something to our future generations also. So now how do you do it? So जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसलमेर को सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, और सनलाइट से बिजली का उत्पन्न होता है. सो देन वी डिसाइडेड दैट इसको सोलर पावर्ड रखेंगे, सो दैट कम कार्बन एमिशंस हो. राइट. वी डोंट यूज प्लास्टिक over there, because again plastic takes millions of years, thousands of years to decompose, and all these things हमने सबने बचपन में स्कूल में पढ़ा ही है. So no use of plastic. जैसलमेर में बारिश जो होती है, it is 150 centimeters बारिश हुई है in the last 10 years. My God. इतनी बॉम्बे में एक दिन में हो जाती है, right. अगर होना होता है तो. So बहुत ही अकाल एयर फैमिन एंड ड्राउट और ये सब होता है. सो टू कंजर्व वाटर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो करते ही करते हैं, but we take care of the water also. There's a water treatment plant we have introduced for the entire village. Okay. So that brackish water ना मिले, cleaner water मिले. अच्छे water नहीं मिले आपको तो बहुत बीमारियां होती है. That's true. We are 70% of our body is made of water, so the water has to be really really nice. So these are the kind of little things we are doing. So whenever we are at the dunes, we make sure that we maintain it. Okay. Okay. Maintain the sanctity of it. We have to make it cleaner, because dunes सिर्फ हमारे नहीं है. We are part of it. There are other beings also over there. जैसे मैं बोल रहा था, deers, vultures, eagles and all that. So you have to respect that as well. Yeah. So this is something which we are doing. We are very very conscious about it. मतलब ये तो no questions asked वाला है. It's like a. That's wonderful. ये तो actually. करना ही करना है आपको. Tell me. Like you mentioned, you work a lot of with the locals, Correct. the local community in Kurd, Correct. right? So, are they involved in operations? Are they involved in hospitality? Or
storytelling? I mean, what is the kind of engagement that they have? पूरा मैम लोकल्स का ही है. Okay. So operations भी वही देखते हैं. ऑपरेशंस भी वही देखते हैं. लाइक फ्रॉम फ्रंट डेस्क, हाँ. अगर आप होटल्स और ये सब में जाते हो, फ्रंट डेस्क से लेके हमारे जितने भी क्यूरेटेड एक्सपीरियंसेस हम प्रोवाइड करते हैं एट डेजर्ट ट्रीज, देयर मोर देन 20 ऑफ देम, सब कुछ लोकल पॉपुलेशन ही करता है. सो ऑल दी ऑल आवर पार्टनर्स हु आर वर्किंग विद अस, आवर टीम कंसिस्ट्स ऑफ पीपल फ्रॉम जैसलमेर, फ्रॉम खूडी, फ्रॉम अदर विलेजेस एज वेल. The idea, ma'am, is that in वहाँ पे लोगों के पास employment opportunities है नहीं, कोई industry नहीं है as such, they are relying on agriculture, और मैंने बताया वहाँ बारिश ही नहीं होती है. So and they're dependent on animal husbandry, दूध बेचना और ये सब करना. तो उनकी livelihood कैसे improve हो, इसीलिए हमने सोचा था कि हम सब लोगों को जितने भी हायर करेंगे हमारी टीम में सारे लोकल्स ही रहेंगे. वी विल ट्रेन देम, वी विल enable them. It sounds, मतलब I don't want to sound pompous about it, but we have to train them so that they also understand the technical know-how of hospitality. They are great at it. I mean, hospitality, nobody can. मैं तो कौन होता हूँ train करने वाला? उनको to but little bit, just like of polishing them. Yeah, I mean, just streamlining it, yeah. them. So that much we have done. और बाकी तो hospitality में you can't beat them. Yes, I agree totally. So, been to Rajasthan couple of times to various places, but correct. Yes, the kind of hospitality they have, the way they treat you, it's like literally Atithi Devo Bhava kind. Yeah. Right. I mean, the way they feed you also, the food and everything. I mean, Just it is. Don't stop feeding you. Yeah. You have to literally fold your hands and say, no, I don't want more. नहीं, फिर वो ऐसे आके कि मनवार है, एक वो word use करते हैं, which and I am the product of मनवार. So every time कि एक और रोटी तो मनवार है, हुकुम मनवार है. They'll do something like this, and you have to eat it. Yes, तो you can't say no to them. बुरा मान जाते हैं वहाँ के लोग. So tell me one more thing, Angad. I'm sure because it's such an offbeat place, building something at such a rural village must have had its own challenges. So was it the infrastructure, the permissions, or was it the mindset of the people? What were your biggest challenges over there? Challenges were not about building an infrastructure. Challenges were more about how to bring people over there. Okay. See, you also need to understand that जैसलमेर एक seasonal मतलब है, from October to March people come there. उसमें भी the flights are very very limited. And plus you have to travel 50 kilometers more to explore all these things, the wilderness, the history and everything which I was saying. So the main challenge was to convince people that this will be an experience of a lifetime. People are dedicated over there, people are hardworking over there. All they need is an opportunity. So the biggest challenge was to convince people of Bombay, Delhi, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu, give an opportunity to Khudi, give an opportunity to desert come trails, and experience it, and you won't be disappointed. So the biggest challenge was that bringing people. Baki tourism sector and everything, it's a streamlined industry in that sense. So permissions or ye sab mein problem nahi hoti. Never. Okay. Yeah. What are your views on responsible tourism, and how do you educate your guests that come to the desert trail? That's a very interesting question. As people, there has to be ownership. 99% of the guests they take ownership because this is your country. This is your Rajasthan. Yeah. So you have to take ownership about it. But there are some bad apples aate hain, they come as if you have to respect the culture. India ऐसी country है जहाँ पे हर 100 किलोमीटर में भाषा जो होती है उसके डायलेक्ट बदलते हैं और 300 किलोमीटर में भाषा बदलती है. True. अब hypothetically if I go to Tamil Nadu, या वो भी जाने दीजिए, अगर मैं आपके घर पर आ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल और आपके घर पे रूल है कि मुझे चप्पल निकाल के आना है, करेक्ट,
अब मैं आपके घर पर आ रहा हूँ तो मुझे चप्पल निकाल के आना पड़ेगा. Similarly, when you're going to these places, because India is so rooted, so culturally strong, so you have to respect that. Sometimes what people do is they are like they badly behave, Yeah. they litter, Right. and they I think it's just that people need rowdy to भी हो be जाते हैं. educated on Yeah, that. so people you need need to respect understand the space you are in. People need to understand that also. Yeah. But sometimes they don't. Most of them they do. 99% of them they do. This is my experience. But you have to respect the culture. You have to acknowledge that they are they behave in a certain way. You have to do that. अब जापान में लोग बाउ डाउन करके ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, तो आपको भी बाउ डाउन करके ही उनको ग्रीट करना है. सो दिस इज़ व्हाट आई फील. दिस इज़ हाउ रिस्पॉन्सिबल यू कैन बी. इट्स अ ड्राउट, बारिश कम होती है, वहाँ पे पानी की कमी है, तो आप पानी वेस्ट करते हुए नहीं कर सकते वहाँ पे. वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. यू हैव टू रिस्पेक्ट वेस्टेज और all these things you have to acknowledge that. So I always urge people that you have to conditions की respect करिए. You have to respect the culture. So those kind of responsibility I feel people should have it. Yeah. Tell me one thing, Angad. Are there some traditions or practices that you have intentionally kept in your total experience at the desert trail? Every tradition. Okay. Right from the hukum culture, right from वो जो तमीज़ तहजीब जो राजस्थानी राजपूत कल्चर में है, सब कुछ है. वहाँ का फोक म्यूजिक, वहाँ का फोक डांस, everything is there. You name it, every cultural aspect is there. Culture क्या होता है? Culture is language, clothing, food, and which god you follow. ये सब मिला के कल्चर होता है. वो सब कुछ है हमारे पास. Because we want to promote that. That is the That's most. the ethos of your... that is the distinctive part of whenever you go to a place, you go to Europe, you see European culture, architecture. ये सब मिलके culture होता है. So everything. You've kept them strongly into your trail. Because that is what makes it distinctive. Na, you come to Rajasthan and it looks like Bombay. तो फिर why would Rajasthan be so special? Correct. So you have to preserve that. You have to promote that. So with respect to that, we have tried really hard to keep it the way it is, and people should feel that they have arrived to a different part. So that is what we have done. So food and everything you name it, everything is authentic Marwadi culture. Yes. Is there a experience of your guest that has really given a very strong impression to you, and that has reaffirmed your thought of the desert trail and how it should be? So the biggest validation I got was there was a couple, अंकल जी आंटी जी आए थे, who were 67 जो हर साल जैसलमेर आते थे. हर अच्छा लगता था उनको. But when they stayed with us, they were supposed to be with us for one night. They stayed with us for 3 nights. And then they experienced everything. All that, the experiences which we curate, they experienced everything. And the biggest compliment I got was that we never saw this side of Jaisalmer. So that was the reinforcement, that was the validation which made us believe that, यार ये हम सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. हाँ जी. Because जो हर बार जैसलमेर आता है और वैसे, that is the biggest compliment we received. So that reaffirmed that what we are doing is we are on the right track. So that shaped everything. It changed everything for me. Changed everything. Yeah. Right. How do you create an atmosphere that feels rooted to the desert's energy? It's the desert affair that you feel, and which is not getting something overtly commercial. आप कुछ मत करो. You just let the culture, the desert, the way it is. कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको. तो उसी को बस एक्सपीरियंस करो. हाँ, बस आप वहाँ जाएं, कुछ क्रिएट मत करिए,
कुछ अपना दिमाग मत लगाइए, वो जो है वो प्रतीक है सुंदरता की। आप बस जाए वहाँ पे एंड जस्ट बी देयर, जस्ट बी, और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। हाँ, नेचर है, प्रकृति है, वो अपने आप सब कुछ कर देती है। आप वहाँ जा रहे हो डेजर्ट में और आप देख रहे हो कैमल्स रैंडमली जाते हुए या वल्चर्स उड़ते हुए, स्टार्स देखते हुए, आपको कुछ नहीं करना। वो Just जैसा be चल रहा with है it. वैसा चलने दें उसे, Let it flow. हाँ, आप एक और वैसे भी मैं तो इंसान ही हूँ, मैं क्या ही कर लूँगा वहाँ पे, यू नो। प्रकृति इतनी बड़ी है, नेचर, Correct. यू नो, प्रकृति तो विशाल है। True. आप क्या ही कर लेंगे। तो मैं बस वहाँ जाता हूँ एंड आई विटनेस इट एंड आई एम हैप्पी, दैट्स अबाउट इट। एंड व्हाट, यू नो, जितने भी गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे, मैं बस उन्हें बोलता हूँ कि आप बस जाएं वहाँ पे और बस देखें, जब अब्जॉर्ब करो आप। और अमूमन, यू नो, एवरीबडी वुड टेल यू द सेम थिंग, जो भी आता है। जब आप आएंगे ना वहाँ पे, बस देखो लोग कैसे रहते हैं। बिजली नहीं है वहाँ पर, जस्ट विटनेस। हाँ, बिजली नहीं आती वहाँ पर, तो कच्चे मकान है, पर लोग 15 किलोमीटर जा रहे ट्रैवल कर। जस्ट सी हाउ दे डू इट, यू विल अंडरस्टैंड। जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना, करेक्ट, बिजली नहीं आ रही यार, एसी नहीं चल रहा, आप सब भूल जाओगे वहाँ पे। आपको लगेगा कि यार बॉस, मैंने जब सबसे पहले कहा था कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, बिकॉज आई लिटिल अपॉर्चुनिटी आई हैड टू सी द वर्ल्ड, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट लाइफस्टाइल, एंड यू विल वैल्यू इट, एंड यू विल वैल्यू इट आल्सो। करेक्ट, यू नो, सो कुछ नहीं करना आपको, बस आप जाओ वहाँ, देखिए, एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Angad, food is always a very integral part of an experience, right? The living example of it. So I'm sure in the desert trail it is also an integral part. So do you source everything locally? Are Everything the locals local. involved? Everything. How does that go? How does that food experience go? So I'll give you an example. Desert Trail ने एक धानी अडॉप्ट किया। धानी इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ अ विलेज जहाँ पे लोग रहते हैं और मवेशी काम करते हैं। मवेशी इज एनिमल हस्बेंड्री। ओके। सो देयर आर 8-9 हट्स, वही कच्चे मकान जो मैंने आपको कहा था, बिजली नहीं, यू नो। तो when the food is made by the local people ना, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती है वो भी लोकली अवेलेबल होती है, जो मसाले चाहिए होते हैं, जायका जो होता है वो आपके हाथों में होता है, right. वो वहाँ की लोकल चीज़ों में होता है। करेक्ट। सो ऑल द फूड एंड एवरी ऑथेंटिक, यू नो, फूड, आप केर सांगरी, राबोड़ी की सब्जी, आई मीन देयर सो मेनी ऑफ देम, गट्टा करी, आपने लाल मास सुना होगा, दाल बाटी, चूरमा, सांगरी, you know, yeah, sangri and all these things you must have heard about. Yes, I've had sangri in fact. Yeah. So everything locals will only do it. Okay. Yeah. And it's grown there only. Everything is grown over there. वो लोग खुद ही खेती करते हैं उस चीज की। गवार फली की, जीरा भी जो हम डालते हैं, तो जीरा भी उगता है वहाँ पर। सब लोकली होता है, वहीं से ही प्लक करते हैं, यू नो, व्हेन यू हार्वेस्ट इट, वहीं से ही प्लक होता है, वो ही खाना बनता है। जो दूध भी होता है, जो वहाँ की गाय है, उसको थार पारकर बोलते हैं, यू नो, जो वहाँ की जो प्रजाति है। थार डेजर्ट है, थार पार करके सिंध में जाती है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसलिए थार पारकर नाम है उसका। ओके। हाँ जी। तो दूध भी जो होता है, इट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, वो हल्का सा खट्टा होता है। अच्छा। हल्का सा। तो वहाँ का जो छाछ भी होता है उसको खट्टो बोलते हैं। तो ये सब मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। सब कुछ लोकल है। वहाँ की छाछ, कोई भी, जैसे दूध का ब्रांड हो, दही का ब्रांड हो, एवरीथिंग इज ग्रोन ओवर देयर। तभी आप मतलब, यू नो, द फूड एंड द culinary एंड एवरीथिंग, जो जायका होता है, तभी आप महसूस कर पाएंगे उसे। सो आर यू प्लानिंग टू डू समथिंग मोर इन योर एक्सपीरियंसेस, लाइक doing workshops or we do that community things that would create more experiences? We I mean somewhere we are doing it right now also. जैसे कुकिंग सेशंस होते हैं, अब लाल मांस वो घड़े में बनता है, वो उसको अंडरग्राउंड कैसे बनाते हैं, उसको खड़ मांस, खड़ कुकड़, ये सब बोलते हैं, जो अंदर
अंडरग्राउंड बनाते हैं उसको. Okay. So all these kind of local food, how they make it, so we make sure that people also understand कि खाना बनता कैसे है, कौन से मसाले लगते हैं, मसाले भी वहीं पे grow होते हैं. So these kind of things, and the women how they make it. So all the vendors also are local. So directly and indirectly वहाँ पे एक छोटी सी entity है Desert Trails. We only have 10 tents. Okay. बट उससे उसका जो पर्क्यूलेशन होता है टू द इकोनॉमी, इट इज़ मैसिव. यू डोंट रियलाइज इट. जैसे 15 हमारे स्टाफ में 25 पीपल, सो 25 फैमिलीज आर आर एंगेज विद जैसलमेर. फिर हम लोकल वेंडर्स से करते हैं. तो वो स्ट्रीमलाइन होते होते वो जो पिरामिड होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है. तो काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा होता है उससे. So to maintain the authenticity of food and everything, we make sure that everything is sourced locally only, not from the city also. Let's dwell into some of your personal life and how this entire journey Yes, of ma'am. being an entrepreneur started. Hanji. So before you started the Desert Trail, what were you doing, and how have some of your experiences, shaped this into your hospitality business? So I am a civil engineer. Right. It's a You very mentioned that. common joke that engineering छोड़ के बाकी सारे सब कुछ काम कर करते लेते हैं. But I did work as an assistant project manager when I was in the UK. I Okay. worked there for a couple of years. Right. So I was always enamored by बचपन से ही, मतलब बिल्डिंग देखना, इंग्लिश में बड़ी कोशिश की थी मैंने कि मेरे को ब्रिटिश एक्सेंट भी आए. नहीं आया? नहीं आ पाया. इतना साल रह के भी नहीं आया. I mean, I can't do tomatoes and Yeah. So Wo- I was very very fascinated by the British culture also. Wherever I used to go, what I realized about myself is that I am very very interested in the history. I am very very interested in people. And I am very very interested in seeing new things. Then मेरा पूरा perspective ही बदल गया. I came back to India. And I went to this beautiful place called Karnataka. So there I saw it is so distinctive from where I come. हमारा खाना अलग है, भगवान भी हम अलग अलग फॉर्म में मानते हैं, लैंग्वेज अलग अलग है. सो दैट रियली रियली फैसिनेटेड मी अ लॉट. सो सबकॉन्शियसली आई फील दैट व्हेन आई वेंट टू जैसलमेर, I recognize that, it is so distinctive. People should experience that. People should, value that. We have so much variety in our country. Right. And this is one of them. 7 कलर्स से ही रेनबो बनता है. 7 इतने अलग अलग प्यारे प्यारे कलर्स हैं. उससे एक एंटिटी बनती है, which is our country. So this is another entity, and I am so fascinated by the culture and everything. I decided that this is something I want to do for the rest of my life. So Were there objections from your family? not at all. Yeah. No. I have a very beautiful family. They have always Been very supportive very in very whatever supportive. venture you कोई wanted to struggle do. नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म में सोना नहीं था, कोई struggle नहीं था. Touchwood, I mean. Grace of God. Yeah. What has been the most rewarding part of this journey, or your personal growth, community impact, or the guests' reactions? What has been the most rewarding? गेस्ट का आना और बोलना बहुत मज़ा आया. We'll come again. उनका बाकी लोगों को recommend करना. हाँ. That gives me immense pleasure. Just to make people very very happy. Just to talk to them, them experiencing it, and seeing things the way I see it. That makes me very very happy. When people are very very happy, I am very very happy. You're a very people's person. Yeah. और बचपन से ही है, मतलब. Okay. ऐसे. So it makes me very very happy when people understand my perspective कि हमने desert trails क्यों start किया थी. And when they understand that, and then they are like यार मजा आ गया बहुत. That makes me very very happy. That's wonderful. हाँ जी. So that is the biggest personal growth. And ऊपर से public जो है, they also the locals also, they also understand, they are also very very happy. तो सब कुछ It's a win-win for all.
Yeah. So that is the biggest victory. Great. People are happy. Everyone. You live in your own workspace as well. You know, a lot of time you must be Lot of spending time, yeah, there. yeah. So, how do you unwind yourself? You're already into a very unwind zone. How do you unplug or unwind? So we have a quad bike. So what अमूमन मैं ये करता हूँ कि जब सारे सो जाए, सबने खाना खा लिया हो, हाँ. ओके दे गो एंड यू नो दे रेस्ट अप, सुबह फिर कोई एक्सपीरियंस करना है, बॉर्डर के पास जाना है, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन जैसलमेर. सो 11:30 12 o'clock के आसपास सब सो जाते हैं क्योंकि ठंडी बहुत होती है. सो एवरीबडी वांट्स टू गेट कोजी, कंबल कराओ और सो मतलब. Correct. और थक भी जाते हैं जब आप घूमते घूमते हैं. हाँ. सो नॉर्मली व्हाट आई डू इज मैं क्वाड बाइक चलाता हूँ. I go to the desert. I just look at the stars in the night. Just imagine that. You know, you're traveling 2-3 kilometers inside the desert national park. Thar desert में dunes को चीरते हुए जाते हो आप एक जगह पहुंचते हो, आप लाइट बंद कर देते हो और म्यूजिक चला देते हो आप, एंड यू जस्ट लुक एट द स्टार्स. मैंने लिटरली टूटते हुए तारे इतने ज़्यादा देखे हैं यूं जाते हुए, और आप बस देख रहे होते हो. एंड दैट्स हाउ आई अनवाइंड. तो आपकी ड्राइव भी हो जाती है. आपको 270 डिग्री मिल्की वे गैलेक्सी दिख जाती है ऑन वेरी गुड डेज, जब सब कुछ फेवर में होता है, क्लाउडी नहीं होता है. बट यू जस्ट लुक अप एंड यू अनवाइंड योरसेल्फ लिसनिंग टू सॉन्ग्स. और क्या चाहिए लाइफ में? देयर इज नो ट्रैफिक, पोल्यूशन नहीं है, खाना पौष्टिक है, यू नो फर्टिलाइजर्स ये सब नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और ट्रैफिक हॉर्न वॉर्न कुछ नहीं है. और आपको छोटी छोटी आवाज में कभी डियर का आ जाएगा, कभी किसी बर्ड का आ जाएगा. बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वहाँ पे, उनकी आवाज आ जाएगी. तारे दिखते हैं आपको. इट स्मेल्स ब्यूटिफुल, यू नो. अमूमन हमारे जो सिटीज है उनकी भी एक स्मेल है, यू नो, बट नेचर की एक अलग ही खुशबू होती है. So like if you go to the hills also, you have that distinct woody smell. Yeah. You go to beaches, you have that sea salty smell. Yeah. And it's beautiful. Every smell जो nature से आता है, that is beautiful. Yeah. So you just go there and you realize that, you know, I was in Bombay struggling in traffic, and here I am रात को ड्राइव करते हुए तारे देख रहा हूँ. So great. What an unwind. Tell me, who do you look up to learn about eco-friendly or sustainable hospitality and tourism? Everyone. Every suggestion which I get, and it could be from anyone. You know, I strongly feel that any good feedback, anyone, you know, age doesn't matter. You know, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है कि नहीं है, बिकॉज अ ब्रिलियंट आइडिया कैन कम अप फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर. Right. You know, it's very good that you're adapting, and you know you're very open to something like this, that you know anything is welcome for. Yeah. From any aspect कोई भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है. You never know क्या क्लिक हो जाए. जैसे डेजर्ट ट्रेल स्टार्ट करने का मेरे छोटे भाई का आइडिया था. Okay. My younger brother was like, अरे ऐसा ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. And I was like, you know, and my younger brother is 8 years younger to me. Okay. Yeah. So then it was just a germination of an idea. उसने ऐसे randomly बोल दिया. And then, so I take ideas from everywhere. So whatever I've told you, the experiences that we do, it comes from, I have just derived it from others only. Or the other. हाँ, ये मेरा original या मेरा brain child नहीं है. So I learn and absorb from other people, और ये काम है मेरा, to learn from other people's experience and create an even better experience for others. That is my work. So that is how I do it. What is one advice that you would want to give to somebody who wants to start, you know, like this kind of a retreat or a resort or a trail or any other such adventure or experience in a rural area specifically, considering you are kind of there? So, study about Rajasthani culture. They always keep your guests and everybody whoever comes to their house, they keep them at a pedestal. So when a tourist is coming, for example, you have to keep him at a pedestal. Matlab, guest is God. Guest is God. You know, that is my learning. There shouldn't be any ego, अहंकार, ये सब नहीं होना चाहिए. Guest is God. वो आपके यहाँ पर आया है, आपके घर पर आया है.
तो आपको उसे मतलब दूल्हा ही बनाना है उसको. And I think तो ही हो also जाएगा. if especially I personally feel if there's something in the rural sector that you are trying to do, keep it authentic. Keep Yes. it as raw Don't and temper real it, yeah. Don't as it temper is. it. हाँ. हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप वहाँ आ रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हो, just be there. You know, rural India is, I feel it's the eighth wonder of the world. How people live, how they manage, you know, how they operate, how beautifully, you know, and they're happy. You know, you get to learn a lot from Lot them. from them. Lot from them. You know, the way they are appreciative of little things which we take it for granted. You know, you understand, you get a new perspective about life. I mean, it sounds very philosophical, but when you see how people operate in very minimalistic things, you know, and they're happy about it. This is such a big philosophy which people don't understand. Correct. You know, we get unhappy in, you know, very easily, but I have seen people in very, you know, it's a tough terrain. Summers it goes up to 52 53 degrees. Survival in itself is difficult there. You know, हाँ. कम पानी है, कम खाना है, सब आपको कुछ धूप में प्रिजर्व जाना करके है, रखना पड़ेगा. सब कुछ प्रिजर्व करना पड़ता है. आई मीन उनकी प्लानिंग खतरनाक होती है. अगले समर में हमको इतना पानी रखना पड़ेगा. उनकी प्लानिंग देखो, नेक्स्ट लेवल है. इन्वेंटरी मैनेजमेंट. आप कितना कुछ सीख सकते हो उनसे. True. अगर आप वही पर्सपेक्टिव रखोगे आप, तो आप मतलब आपकी जहन खुले होने चाहिए. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कहीं से भी कहाँ से भी आइडिया आ जाए, यू नेवर नो. You never know. मैंने इन्वेंटरी मैनेजमेंट ही उनसे सीखा था. क्या प्लानिंग होती है उनकी. इतने बजे निकलना पड़ेगा, सूरज इतने बजे आएगा, तो इतने टाइम में हम वहाँ पहुँचेंगे, तो फिर वहाँ पे इतने टाइम रेस्ट करेंगे ताकि हम वापस से आ सकें. क्योंकि अगर आपको 15 किलोमीटर चल के जाना 15-20 है. किलोमीटर आपको पानी लेने जाना है. हाँ. यू नो, तो खतरनाक प्लानिंग होती है. फिर उतनी गर्मी में उनको खेती भी करनी है. आई मीन इट इज क्रेजी. यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. I'm sure you can learn a lot. A lot we discussed. Let's get into some fun round now. Sure, ma'am. Yeah, I'm going to do a rapid fire with you. हुकुम, आदेश करें आप. Okay, morning in the dunes or night under the stars? Tough actually, yeah. Mornings are also pretty because you get to see what the beauty is. I would prefer night under the stars. Yeah. Since you take your bike out and unwind, I think it will be night under the stars. Yeah. Okay, tea by the fire or desert jeep ride? Oh, tea by the fire ना. ठंड नहीं लगेगी ज़्यादा अगर जाएंगे. चाय gets cozy. So yeah. What would you prefer? I would do a jeep. Desert. रात को ठंडी में क्या बात. So you are more of an adventurer. I love to I do. get the kind of traveler you are now. मैं समझ गया. Desert trail सब उस हिसाब से क्यूरेट करेगा आपके लिए. Thank you. Okay, guest review or local complaint? Yes. What means more to you? Everyone should be happy. I mean, तो मतलब guest. Oh, like they give you reviews on like Google and stuff like that. Yeah. नहीं. I think locals Local should complaint. be. Yeah. Guest खराब review लिखेगा ही नहीं. I like that confidence, Angad. Yeah, That's yeah, local fantastic. complaint, yeah. That's fantastic. People shouldn't be unhappy. You should spread happiness. So yeah. What is the favorite season in Khur? I like the summer nights. Summer nights. Yeah, my favorite. ठंडे हो जाते हैं बहुत. ठंडे भी हो जाते हैं क्योंकि धूप बहुत रहती है और गर्मी बहुत रहती है, तो जानवर भी बहुत बाहर निकलते हैं. Right. तो that is my favorite time. I love to spend time with animals and yeah. Eco resort in the desert or in the mountains? And I know the answer. नहीं. I mean ये nature को नहीं मतलब compare कर सकते. Since I am doing it in desert, so desert right now. But you can't pick and choose between. Nature is beautiful. Nature विशाल है. हम मतलब choose करने वाले तो नहीं लगते. Okay, now the next one is stay or skip. So would you skip something or would you want to stay with it? Perfect. Go for it. Wi-Fi free zones. हाँ. Stay. Open air jungle showers. Oh, stay. Comeback yoga sessions. Yeah.
stay. Stay. Solar powered live music nights. That would be really interesting, yeah. Yeah. I mean, think about it. Yeah. You know, Right. that's the future, though. We'll get there, but it has to be stay. Sometime. Yeah. Absolutely. Wonderful, Angad. Thank you so very much. Thank you so much. You've been really kind You in have inviting been me. wonderful, and I'm already looking forward to, doing a desert trail with आप you. बिल्कुल पधारें, आप बिल्कुल आएं. And I wish you much more success. Maybe you adopt another 10 more villages and have 10 more desert trail safaris like this. And we get to see the real Rajasthan, and maybe you move to other states and, bring the real India back अरे to the नहीं Indians. नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप आएं. I will work really really hard to make it one of the best vacations you will have. I can't vouch. मतलब we'll work really really hard. I hope we achieve. I'm sure. that, yeah. I'm sure it will be. जी, Thank you so much, Angad. Thanks a lot. Thank you. Cheers. Thank you.